Hello, guys, and Assalamu alaikum. This is Ali Baqir Khan with another episode of Youth Alumni Association. Today we have Sami here with us. Sami, how are you doing today? Doing good, thank you. Thank you for having me, Ali. No problem at all. I hope you're doing well. And just a little bit of introduction about Sami. Sami is working at VFairs as a paid search specialist. This is what I know about you. And as far as his educational journey is concerned, he completed his master's in business administration from University of Lahore. So that's what I know, but I think rest is on you. Just explain a little bit a little bit about your career journey, your educational journey when you were a child. What did you at that point of time think that what did you want to become? Because you belong from a family. I know a lot of people from your family as well. So did Right. you follow them, or what was the journey like? So go ahead and explain, Sure, the youth out there. sure. First of all, hello everyone, and thank you for having me, Ali. Yeah. Okay, let me start off from the beginning, right? My primary school education. Okay, I was born in a small city in Nigeria. Okay. That's a country in Africa. Okay. बहुत से misconception होती है लोगों की when we say Africa, they think it's a country, but Many obviously. Africa South has many. Africa because hai to people think about that. True. So Nigeria is a country in West Africa. Nigeria is a very oil-rich country, but a sad reality is कि पाकिस्तान और नाइजीरिया में बस 19-20 का फर्क है. Corruption levels and all. Even though Nigeria is a very oil-rich country, they have one of the highest GDPs in Africa. And they're I think second or third largest exporter of crude oil. But overall, my dad was there in 1970s. I have 4 elder sisters, and I was born in 1990. और वहाँ से फिर मेरा education वहीं से start हुआ Nigeria में. A good thing is that because I was in Nigeria, English language is not a big problem because we studied in English and all. Okay. But my primary school education was from it started off from a Nigerian school that was owned by a British lady that had been in Nigeria before the independence of Nigeria. I see. तो ये है कि पढ़ाई का जो है ना नाइजीरिया में it is good in the sense कि मुझे अभी भी याद है मैं class 3 or 4 में था. They used to make us have these exercises जहाँ पे we would buy and sell something. तो they were already teaching us practically कि अगर आपको 20 रुपए की चीज खरीदनी है उसकी प्राइस अगर 15 रुपए की है तो you have to get a 5 rupees change, Negotiation तो वो थोड़ा सा skills negotiation skills शुरू से ही आप लोगों को बताते थे, which is a good हाँ thing. शुरू से which is a good thing. अच्छा, the other thing is कि similar to what happens in Japan कि when a student goes to school there, you have to sweep your class yourself, you have to wash your washrooms yourself, you have to clean your table and desk yourself, and then classes begin. Nigeria में भी उनके culture में ये है कि वहाँ पे जो है ना when you start off with your day, before starting off you clean your classroom, sweep it off. तो हर एक बच्चे की रोस्टर लगा हुआ होता था कि इस दिन ये बच्चा करेगा. तो आई थिंक दीज आर फ्यू थिंग्स जो हमें पाकिस्तान में भी पिक करनी चाहिए क्योंकि यही कुछ डिसिप्लिनरी चीजें हैं जो इनकलकेट करना शुरू करते हैं सफाई वगैरह का. कि जब भी अब इवन व्हेनेवर एक आदत सी है कि व्हेनेवर आई सिट डाउन ऑन माय लैपटॉप, आई हैव माय टेबल हियर, तो मैं सबकॉन्शियसली टिश्यू से उसको पहले साफ करता हूं. लेकिन आई थिंक वही बचपन वाली चीज है. शुरू से आपका मतलब है कि एजुकेशनल जर्नी जो आपकी हाई स्कूल से भी पहले की होती है, it counts a lot. It counts a lot, 100%. मतलब that's where you know teaching begins at home वाला concept. They really take it to the next level by introducing those things in school. तो थर्बो स्कूल नाम था उसका. अच्छा टाइम गुजरा. देन वी शिफ्टेड टू अ न्यू यू कैन से सबर्ब विद इन दैट सिटी. तो वहां पे एक और स्कूल था जो वो भी एक ब्रिटिश लेडी का था, जारिया चिल्ड्रन स्कूल. वहां से यू कैन से आई कंटिन्यू फ्रॉम प्राइमरी 4, 5, 6. मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था. एक मसला है वैसे जो मतलब एड्रेस में करना चाहूंगा if any teacher या anyone is watching. एक जो गलत चीज होती थी नाइजीरिया में, इट्स लाइक ग्रेडिंग सिस्टम हमारा जो है ना क्लास 1 से ही शुरू हो गया था. तो वो जो है ना ABCDE का कॉन्सेप्ट ना वहां से इतनी अर्ली एज से जब शुरू होता है तो आई यूज्ड टू लाइक गेट C's इन अ फ्यू थिंग्स. तो वो जरा एक मेंटल फोबिया हो गया था मुझे कि यार C ना आ जाए, और C's और B's से ही
आपका मतलब है कि शुरू से ही वो ग्रेडिंग मेंटालिटी एक हाँ, स्टार्ट हो ग्रेडिंग जाती है, मेंटालिटी स्टार्ट हो जिससे वो जाती एक है, फियर फैक्टर एक स्टार्ट हो जाता है बच्चों के दिमाग में कि यार व्हाट इफ आई डोंट गेट फेल इन नहीं इन होना। दैट सब्जेक्ट। हाँ, तो फिर अगर उनको एग्जैक्ट लगेगा कि वो इंटरेस्टेड हैं बट दे कैन नॉट स्कोर गुड, दे वोंट इवन गो इनटू दैट सब्जेक्ट, राइट? बिकॉज 100%। अगर तो हम ग्रेडिंग ही देखेंगे तो फिर तो हम जाएंगे ही नहीं, हम कहेंगे यार अगर मेरी और या गो अहेड। मैथ्स में बेसिकली जो है ना, was my problem, like I was scared of mathematics. हम्म। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि I did my bachelor's in software engineering, so I had to love maths. I see. You had But to. शुरू There was no में option. I had to, there was no option. हम्म। तो ये कुछ चीजें हैं, नहीं let देखिए, me मैथ्स continue. एक ऐसा सब्जेक्ट है आप जितना भी इग्नोर कर लें तो किसी ना वो किसी आ रहा लेवल पे है आपको हिट जरूर करता पकड़ना है है। ऐसी है। एग्जैक्टली। तो बहरहाल सेकंड प्राइमरी स्कूल ये हो गया, देन सेकेंडरी स्कूल आई डिड फ्रॉम नाइजीरिया, जारिया में ही हम काफी अरसा वहीं थे। आफ्टर डूइंग लाइक माय इंटरमीडिएट वहां पे बेसिकली इट्स जूनियर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल शुरू हो जाता है। मतलब वहाँ के एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि 6 साल तो प्राइमरी स्कूल हो गए, फिर 3 साल जूनियर सेकेंडरी इज बेसिकली योर मैट्रिक, 3 years, and then 3 years is your senior secondary school, which is equivalent to intermediate. I see. ठीक है, तो I see. I did that 12 years of education पूरा नाइजीरिया में, Nigeria से. So you नाइजीरिया actually से completed your 12 years of your education in इन Nigeria, which नाइजीरिया, was a very बिल्कुल big part of your career journey, I think. आपकी पार्ट ऑफ माय education journey. करियर, Yeah, I think ट्रू। a तो major मैं part you spent 16 in years, Nigeria. exactly 16 years का था when I completed my West African Achha, now Education this is Council going to be diploma. really interesting, coming from Nigeria to Pakistan and adapting with changes. Now, this is for people out there who move to different suburbs. बिल्कुल, Since, I mean, my father, he used to work in FBR, so we had to move different places. different Islamabad, I places, was born in Islamabad. Then we went to, a couple of different cities. Now, finally, I'm true, in Lahore for, 10 years. So right? how did you cope up? Now, let's come up with the second part. So you moved from Nigeria to Now Pakistan. I Yeah. moved to Nigeria and I did my O levels as well from Nigeria, to be honest. मतलब वाइक के बाद ना मैंने थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम मेरा थोड़ा डिले हुआ, लाइक मैं 16 years का था, एंड देन आफ्टर दैट अम्मी अब्बू वर लाइक नहीं इसको ना ओ लेवल भी कराओ, ओ लेवल ए लेवल भी करवाना है इससे। तो फिर मैंने ओ लेवल का एग्जाम 6 महीने में तैयारी की, क्योंकि 6 months. 6 months, 6 months में की, और बस अच्छे ग्रेड आ गए, इन द सेंस कि इट वाज अ क्लियर कर मिक्सचर ऑफ लिया आपने बेसिकली, हाँ बीज एंड सीज से ही क्लियर which is किया, एंड आई fine. थिंक आई B हैड is वन not a ए। bad grade. अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैंने उर्दू इस्लामियात नहीं पढ़ी, मुझे उर्दू पढ़ना भी नहीं आता, अभी भी नहीं आती, आई कैन नॉट रीड उर्दू। Obviously you were from ये that है British, मतलब, आपका स्कूल था, British lady थे ये तो, एग्जैक्टली I और understand that part. वहाँ वहाँ पे यही होता था, 5 सब्जेक्ट्स ओ लेवल के और 3 सब्जेक्ट्स ए लेवल्स के। तो आई डिड माई ए एस इन, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई ए एस इन Nigeria, and then when we came to Pakistan in 2010, I did my A level complete, Okay. 2010 में। Okay. फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन किया। नाउ दैट इज वाज माय पाकिस्तान वाली जर्नी के व्हेन वी केम टू कराची, मतलब आई वी वर, मेरी अम्मी एंड अबू फ्रॉम कराची, I see. तो अम्मी वाज लाइक चलो अब नाइजीरिया में पढ़ना ही, पाकिस्तान में पढ़ना ही है तो वहीं चलते हैं जहाँ पे मैंने अपना बचपन गुजारा, अम्मी का ये था। सो वी वेंट टू कराची, एंड कराची में बेसिकली एक अम्मी अब्बू के ताल्लुकात, बस वो होता है ना जब बाहर रहते हैं तो एशियंस विद इन दैट प्लेस, पाकिस्तानी जब बाहर मिलता है तो इज लाइक फैमिली। तो हमारे काफी अच्छे फैमिली फ्रेंड्स थे। तो एक लेक्चरर थे जो सिटी स्कूल में पढ़ाते थे कराची के, तो ही न्यू अ फ्रेंड, ही वाज लाइक अच्छा गुलबर्ग में जो है ना, गुलशन इकबाल में बेसिकली Gulshan Iqbal. एक फेलो उनके कोलीग थे, उनके फेलो कोलीग थे, सर फहीम नाम था उनका, तो वेरी नाइस मैन। I've not been in touch with him, but he remembers me once he heard कि अरे नाइजीरिया से आया, he was like नहीं नहीं एडमिशन तो हो गया है इसका, हालांकि we came in between the session, he was But like नहीं नहीं आप Pakistan बेफिक्र रहें welcomed you ये, मतलब with full arms के जी नहीं ठीक exactly है, full, so with that's full arm। हाँ. but वो कल्चरल चेंज काफी डिफरेंस था, क्योंकि अब वहाँ पे ब्रिटिश सिस्टम है काफी, इवन दो वी आर ब्रिटिश कॉलोनी, यहाँ पे बहुत अमेरिकनाइजेशन है, स्पेशली इन अवर इंग्लिश लैंग्वेज, लाइक जी और एस वाला मसला। तो अब वहाँ पे जब मैं गया था, मुझे याद है कि, और मिक्स स्कूल था, सो आई वेंट एंड आई सैट डाउन बिसाइड अ गर्ल,
and the whole class was looking at this guy अब कि आपके यार लिए ये ये बंदा, चीज थी बड़ी अब नॉर्मल, मेरे लिए क्या था हमने कि कहा एक ये इसमें ऐसे क्या हो गया, गो क्या हो अहेड, गया। लेट्स लिसन दिस थिंग। अच्छा जी। तो ये थोड़ा सा था कि अच्छा क्लासरूम में यहाँ पे लड़कियां बैठती हैं और यहाँ पे लड़के बैठते हैं, अगर एक लड़की एक रो पे भी बैठ गई तो पूरी रो खाली रहेगी, लड़का कोई नहीं बैठना। मतलब which तो is वो again कि आप ऑड बच्चे था मेरे हैं तो लिए। why would you create that culture and you know especially या अब तो खैर पहला culture दिन ये है मेरा कि आया you था। know cop and you cannot forget it, you can never forget it कि जी मैं नाइजीरिया से आया हूं and the class And is then you know and walking then around के I क्या had हो रहा asked है। the girl, can I have a ruler? तो Okay, she looked at me like this, like, what am I saying? मैंने पहला दिन है, मुझसे ही बात कर रहा है ये। मतलब what तो was the class at that time, कौन सी क्लास में थे आप? यार ये A2 की क्लास थी। It was I 8th think we were class? नहीं A2 A level की A2, क्लास अच्छा थी। A levels, I'm so We sorry were for that, हाँ yeah A of levels की। course 12 years तो आपने वहां गुजारे। अच्छा हाँ अब गुजारे तो हाँ फिर खैर A levels में थोड़ी सी मेंटालिटी ऐसी हो जाती है लोगों अब की। हाँ, दूसरी चीज ये यहाँ पे पाकिस्तान में I think they don't call it a ruler, they call it a scale। स्केल रूलर, हाँ वैसे आई यूज्ड टू कॉल इट अ रूलर एज वेल बट यूजुअली स्केल ही चलता है कि जी स्केल स्केल ही लाएं चलता कि नहीं, है। तो और उसको पता ही नहीं वहां चला पे होगा कि क्या कह रहे हैं आप। क्या कह रहे हैं। और क्लीनर इज बेसिकली एन इरेजर, मतलब डस्टर, इरेजर को वो क्लीनर कहते रेजर, हैं, हाँ डस्टर। बिल्कुल जी। तो ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज के डिफरेंसेस थे, हम्म। बट ओवरऑल दोस्त अच्छे मिल गए थे मुझे। आई स्टिल एम कांटेक्ट विद 6 of my So you friends। were वो not fully satisfied with the culture that you were expecting because हाँ obviously काफी आपने डिफरेंट था। discrimination देखी, you know because खैर we guys also you know studied in co-education, यहाँ पे तो खैर co-education पढ़े तो लोग specifically बताते हैं कि जी हम तो co-education में, वो अक्सर एजुकेशन schools है ना कि for boys and for girls, you know stuff like that. I think this is the start जहाँ पे हम लोग lack कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि we अच्छा दूसरी are, चीज ये है कि हाँ हम लोग मल्टी रिलीजन से भी पढ़े, लाइक आई हैड क्रिश्चियंस इन माय क्लास, आई हैड मुस्लिम्स इन माय क्लास, तो now you need to you know settle down, you need to speak to डाइवर्सिफाइड them। था। नहीं अब तो देखें जी डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगी तो where are you gonna go, I mean you have to you know interact। हाँ अपनी जो ethical values हैं वो घर से सब सीख के आए, तो मेरे नहीं ख्याल से इसमें कोई मसला होगा कि जी if you guys are getting along। अब जिस ना corporate level में you know you're working with a lot of women there, you know I used to work एग्जैक्टली and I still am working with a एग्जैक्टली lot of girls and females and men around, so बिल्कुल and we enjoy it together, I mean we like we एग्जैक्टली treat them equally, I mean we have एग्जैक्टली never thought you know a single word के यार वो तो लड़की है या वो तो वो लड़का है, you लड़की know है I वो mean लड़का it's है, और वो एक गंदी मेंटालिटी आती नहीं है क्योंकि वी आर ऑल कुलीग्स, बहन है, हाँ कुलीग है, दोस्त है। मतलब जिस तरह आप फ्रेंड्स तो कह लें, आप कोलीग्स कह लें, बिल्कुल कोलीग इज अ वेरी बिल्कुल गुड वर्ड यू नो, एंड सो स्कूल्स एग्जैक्टली में भी आई थिंक थोड़ा सा होना चाहिए, बट होना दैट चाहिए। डिपेंड्स अगेन ऑन द फैक्ट कि आपकी जो सोशल मीडिया है उसका जो इम्पैक्ट है। उसका इम्पैक्ट है जब आप एग्जैक्टली। सलमान खान की बॉलीवुड फैंस अगर कोई इंडियन देख रहे हैं तो डोंट थिंक कि जी हम आपके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, बट पॉइंट इज हमारे यहाँ भी शान और इस तरह की अगर मोहम्मद राना टाइप मूवीज देखेंगे आप जाके कोई बिल्कुल ही टियर 3 क्लास की, या बिल्कुल ये फिर ये यू नो तो फिर ये चीजें उनके माइंड में आएंगी जो कि आई थिंक पेरेंट्स को, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर माई एरा, पहले तो जी केबल से स्टार्ट हुआ तो हमारे जो फादर थे उन्होंने कहा जी चाइल्ड लॉक होगा, नेशनल ज्योग्राफिक हम देखते थे, स्टार प्लस यूज्ड टू बी देयर, उसमें 2-3 एग्जैक्टली एक बच्चों के प्रोग्राम्स होते थे, वो सोन परी एंड ऑल दैट, यू नो वी यूज्ड टू वॉच इट। स्टार मूवीज पे पीजी राइट रेटिंग होती थी, एवरी वीकेंड वी यूज्ड टू वॉच अ मूवी विद आवर पेरेंट्स एंड दे यूज्ड टू सी, पहले से उनको पता होता था कि ये मूवी दिखानी है और उनके क्या बच्चों है के मूवी, साथ बैठ के बिल्कुल देखनी। So this is how you should एग्जैक्टली be getting along, but आजकल शुड पेरेंट्स ब्रिंग के अप योर, आजकल टाइम ही नहीं है जी, आजकल तो पेरेंट्स वो इतने मसला हसल ये में, है आई थिंक पेरेंटिंग। which बिल्कुल is can you elaborate on that as well, what do you think के पेरेंटिंग का क्या कितना इम्पैक्ट है? आई थिंक जी। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, स्पेशली आजकल की पेरेंट्स। आई एग्री, आई एम नॉट अ पेरेंट येट, बट जब मैं देखता हूँ, लाइक व्हेन आई इंटरव्यू पीपल नाउ, हम्म आई इंटरव्यू पीपल, आई एम एट अ सीनियर लेवल। अब जब फ्रेश ग्रेजुएट को मैं इंटरव्यू करता हूँ तो आई एम ऑलवेज लाइक यार व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग हम्म समवेयर, हम्म ये वाला है कुछ मसला। और वही है पेरेंटिंग का मसला, ये है कि पेरेंट्स आर बिजी राइट नाउ। मदर्स, अभी भी मेरी अम्मी के साथ मैं अक्सर जब गली से बाहर निकलते हैं तो 6-7 साल की बच्चियां दिखती हैं अकेले घूमती हुई, हम्म दुकान जा रही हैं। हम्म सो अम्मी मुझे कल ही बोल रही थी, समी मैं ये सोचती हूँ कि हिम्मत कैसी होती है इन मदर्स की कि बच्चे को भेज देते हैं अभी, अकेले। स्पेशली व्हेन हमें पता है लाहौर में अभी कितने मसले चल रहे हैं, हम्म किडनैपिंग्स की एंड ऑल, हाउ कैन
मतलब No, I where's mean, the fear? obviously it's going on. I'll give you a very good ये है example कुछ है. पेरेंटिंग मैं का. आपको बता, मैं यूएई में था, तो जो मेरा बीच रेजिडेंस का एक वो उन्होंने ना वॉक पाथवे बनाया हुआ है, विच इज वेरी ब्यूटीफुल. आप अगर गए हो या कभी जाएं तो. खैर, आई वाज गोइंग देयर, सो आई रियली लाइक्ड इट चाइल्ड ना. मुझे था कि मैं इसके साथ ना एक सेल्फी सी लूं. तो आई आस्क्ड द मदर ऑफ द पेरेंट के जी, अब उसने पहले पूछा है उससे, छोटा सा बच्चा या बच्ची थी 5 years की, कि डू यू वांट टू टेक द पिक्चर विद हिम. दैट मीन्स कि वो अभी से उसको बता रही है कि बेटा, आई एम नॉट गोना फोर्स यू, दिस इज योर कंसेंट. Yeah, She was like, yeah, that's yeah, fine. That means she's comfortable. Okay, guys, you guys can go ahead and take a picture. Are you getting my point? So right. it depends. Yeah, It depends. Ab wo, obviously, you're talking about Dubai, you're talking about JBR, talking about JP, yeah, बिल्कुल. developed countries, out there. Ab Pakistan mein, the issue, unfortunately, is कि देखें, अब coming towards the career counseling aspect. Uh, खैर, आप अपनी career journey बता रहे थे पहले. Let's just finish that and then we'll move on. Go ahead. Sure. So after completing my university in Karachi, अच्छा university का भी ये सीन था कि वो A level O level वाला बड़ा मसला है, and I really think education system really needs to change. कि O level का बच्चा A level का बच्चा equivalency बनानी पड़ती है, ये मसले वो मसले, मतलब 10% काफी जो है मार्क्स ना, कट जाएंगे आपके, ये हो जाएगा, वो हो वो जाएगा. एक हैसल है. और एक आई थिंक हालांकि वेस्टेज ऑफ टाइम है. दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू वेस्ट ऑफ कॉल इट. टाइम यार. हमारा इंटरमीडिएट आई बिलीव के 10 साल से वही सिलेबस चल रहा है, वही 10 नहीं किताबें जी, पढ़ रहे हैं. बहुत अच्छा हो गया. माय फादर बहुत स्टिल, अरसा हो गया मेरे याद है मैं मिस्टर चिप्स पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा बेटा मैंने भी पढ़ी हुई है. मैंने कहा बाबा आपने इतने पहले पढ़ी है. थी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो तो जी. अब ओ लेवल ए लेवल के बच्चे की इक्विवेलेंसी कैसी बनती है जब कैम्ब्रिज का सिलेबस हर 2-3 साल में चेंज होता है. हर साल भी आई थिंक दे चेंज इट. तो ऑब्वियसली ये ट्रेंड्स थोड़ा सा देखते हैं ना लोग. हमारी और एजुकेशन मिनिस्ट्रीज नीड टू लाइक सिट डाउन एंड से कि यार वी आर दे परसेंटेज नीड टू कम होने की बजाय बढ़नी सीरियसली चाहिए. कम अप विद इट. देखें ना, इसमें आपका बजट लग रहा है ना, आप कुछ लग रहा है. जो आपके बंदे बैठे हैं उन्होंने रिसर्च करना है और करिकुलम बनाना है. दिस मींस दिस इज अ रिसर्च कंप्लीट की लैक ऑफ एफर्ट. You're not giving your time to बिल्कुल. this important fact that we need to educate the society. और मैं आपको सबसे बड़ी रीजन बताऊं उसके पीछे जो है, वो ये कि आई थिंक वो डरते हैं कि अगर बहुत सी लॉट पढ़ी लिखी हो गई तो who's gonna come up to us, या कौन हमारे पास आएगा पूछने या अपने मसले बताने, और हम कैसे फिर उनको बताएंगे कि जी हम मिनिस्टर्स है या हमारी ऑटोनॉमी है. सो दिस इज अ मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गिव टू द नेशन. Sami, you can also add on to it that start 100% बिल्कुल. building your own ventures now. आप ट्रू entrepreneurship की तरफ आए. ट्रू. Think out of the box. आप देख लें क्या हालात हैं, गवर्नमेंट जॉब भी कर लें, क्या मिल रहा है आपको, मतलब आप एक क्या मिल रहा है? बिजली का कुछ नहीं बिल मिल भी रहा. अफोर्ड कर लें तो बहुत बड़ी बात है, 2 कमरों का. बहुत बड़ी ठीक बात है. है. बिल्कुल तो बिल्कुल. पॉइंट बीइंग इज कि जब इतना इतना एक एक क्याओस मचा हुआ है, इतनी एक जिसे कहते हैं इकोनॉमी इज गोइंग नोवेयर. जब आपको पता है कि नो जी वे. एक एग्जैक्टली. बहुत बुरी सिचुएशन में हम फंस चुके हैं, तो फिर इन्फ्लेशन बिल्कुल इतनी पीक पे है. जॉब मार्केट में आप बिल्कुल. फिर कहते हैं जी जॉब्स नहीं मिलती, इवन दो देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज पीपल हु रियली वांट टू गेट दोज जॉब्स. आजकल तो खैर मैं लिंक्डइन पे देख के आई एम हाईली इंप्रेस्ड बाय पीपल. देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन. फिर मैं अगर किसी यंगस्टर से पूछूं कि आपका लिंक्डइन पे अकाउंट, और वो कहें जी मेरा तो अभी तक अकाउंट ही नहीं है, तो देन दैट्स योर फॉल्ट, नॉट दैट्स आवर्स. योर फॉल्ट. एग्जैक्टली. तो दैट मींस कि आपको सोशल मीडिया पे मूवी रेटिंग का पता है कि शाहरुख खान ने जो है वो IMDb पे टिकटॉक 9.5. का पता है. टिकटॉक का पता है मीनारे टिकटॉक पे पाकिस्तान में क्या इंसिडेंट मैं हुआ. क्या सारी हुआ गॉसिप था. करना आपको आती है. वो एलेनोर रूजवेल्ट की कोट में हर ऑलमोस्ट पॉडकास्ट में कहता हूँ कि जी वो ये कहती है देयर आर 3 kinds of people. फर्स्ट कैटेगरी इज हु टॉक अबाउट आइडियाज, एंड दे आर द बेस्ट वंस, क्योंकि उनकी वजह से न्यू आइडियाज क्रिएट होते हैं, इनोवेशन आती है ट्रू और कुछ ट्रू. अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं. सेकेंड कैटेगरी इज हु टॉक अबाउट इवेंट्स. ठीक है, 50-50 है कि यार आप इवेंट पे गए, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने अपना कमेंट दिया, एक फीडबैक बताया और अगले ने उसको इम्प्रोवाइज किया. नहीं भी आपको अच्छा लगा, अच्छा था भी सही, बट दैट्स द सेकंड कैटेगरी. द लास्ट एग्जैक्टली. कैटेगरी जिसमें हम लोग पीक पे हैं जी, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे पॉलिटिशियंस, हम लोग खुद, हम घर में सुबह उठते हैं, बात इधर से शुरू होती है, वो है टॉकिंग अबाउट पीपल. यार वो एग्जैक्टली. मोहल्ले वाली आंटी ने अल्टिस ले ली है, पता नहीं अभी तक तो मेहरान पता पे नहीं. थी, गाड़ी कहां से आ गई है. मतलब यार, why do you even have to think about what she's doing?
एग्जैक्टली वो बात वही है कि अगर आप यूएसए कनाडा पे देखें, हाँ, पीपल ऑफ द सेम पे स्केल, उसके पास टेस्ला खड़ी हुई होगी, आपके पास प्रियस खड़ी होगी, बट इट रियली डजंट मैटर, क्योंकि इट इज नॉट मैटर, इट शुड इक्वल नॉट मैटर। इक्वलाइजेशन और इक्वल वो है, मतलब ये कुछ है, आप रिफॉर्म्स की ये बड़ी जो जरूरत आप है देखे ना, जो इस फ्यूडल एस्पेक्ट। एक आपका कल्चर चल रहा था, जो एक एक पूरी हिस्ट्री है, अगर तो आप वही रिपीटेडली करेंगे तो फिर यू डिजर्व व्हाट यू आर गेटिंग, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। एग्जैक्टली तो समी, गो एग्जैक्टली। अहेड एंड कैरी ऑन। फिर करियर जर्नी तो आपने बताया, फिर आप तो फाइनली किस तरह से प्रोफेशनल जर्नी की तरफ थोड़ा सा, लेट्स कम टुवर्ड्स दैट श्योर, आफ्टर एंडिंग दैट इंटरेस्टिंग करियर interesting thing जी। is कि I started off as a software engineer. I did my 4 years of bachelor's in, अच्छा मैथ्स मुझे मुझे अम्मी अब्बू always wanted me to be a doctor. ओके, वो ये टिपिकल होता है ना फैमिली में, my dad was a doctor. ये तो मेरी तो बेचारे डायरी थे, है और मैं तो लिटरली इस पे लिख लिख के थक गया हूँ। डॉक्टर डॉक्टर, इंजीनियर इंजीनियर, आजकल कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ भी लोग आ गए हैं, कुछ आईटी भी आ गई है, बट चलें, लेट्स गो अहेड, but आपके बारे में भी फिर लिखने लगे। I didn't want to become a doctor. I had a conversation with my sister and I told her, see, it's not cut out for me. I'm not going to do that. तो I didn't like maths. So एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यूथ को कि to be honest, liking something and not doing something is all in our minds. I had to train my mind to, नहीं मुझे जो है ना इंजीनियरिंग में ही जाना है, so I am going to start loving maths. So I had mind game का बड़ा होता है, and आपका मतलब that is अगर one आप thing. इंटरेस्ट आपने डेवलप कर लिया है तो जस्ट परस्यू इट विद फुल पैशन, कि यार यस, बिल्कुल, मतलब वो एक कोट है, फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू से दैट यू कैन। बहाने नहीं ढूंढने के, ये नहीं हो सकता, ये है। नेगेटिविटी नहीं जब लेके आनी। अगर आप, नेगेटिविटी अगर नहीं, आपको एक डॉक्टर को देख के लगता है कि यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, देन इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, जस्ट गो अहेड एंड गेट इनटू इट एंड यू विल you बी want to वन। be a doctor, you want to be a doctor but you don't like biology, start loving biology. You want to be an engineer, you don't like maths, you don't like calculus, then start putting in a lot of time into maths and don't run away from it. So that's what I did. मैं maths का चीता बन गया, मतलब calculus, अब ये integration, वो बच्चा है जो differentiation, नाइजीरिया में मैथ से भागता था, भागता था। यू नो, ए लेवल में मैंने मैथ्स की, एड मैथ ओ से एंड ए किया लेवल, आपने, ठीक है। एड मैथ्स रखी, और वो वाली मैथ्स का लेवल हाई लेवल ऑफ होता है, कोर्स, मतलब ऑफ कोर्स। और उनके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि गाड़ी चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसको फिर आप कैलकुलस का मतलब एक इक्वेशन बना के प्रॉपर वो सॉल्व मैं करो। न्यूमेरिकल एक जो एक यू यूज योर प्रॉब्लम ब्रेन। सॉल्विंग, हाँ, स्किल्स, आपकी वन आईक्यू मोर कैसे थिंग होती है, या वन मोर थिंग आई रियलाइज व्हेन आई केम टू पाकिस्तान, क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा था मैंने कोचिंग भी करी थी, बच्चों की मैं ट्यूशन भी कराता था। So when I started, I was like, okay, I have to teach him a new thing. So the kid said, नहीं, मेरा कल पेपर है, मुझे याद करना है बैठ के। I was like, ये क्या होता है? अच्छा, याद करना है बैठ के? हाँ, So he started like hipsing क्रैमिंग। it, यूं हिल के। So I was like, ये क्या हो रहा है? आपने तो कर ये है दिया, हमारी, ये बड़ा मसला है, वैसे ये बड़ा मसला है, बहुत और ये बहुत बड़ा अभी भी इशू है। when I hire someone and when I have an intern and I tell them ये करना है, जैसी सिचुएशन चेंज होती है ना, दे फ्रीज। अब क्या करना है, क्योंकि वो एक रट्टा और एक पैटर्न फॉलो करने क्योंकि की आप आदत जब हो गई है बिल कि बोर्ड्स पे बच्चों के नाम डालना चाहेंगे कि जी 1050 में से 1030, और अगर आप इस तो बेसिस पे उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो बच्चे तो फिर अप्रिसिएशन के पीछे भागेंगे, वो कहेंगे ठीक है जी हमें मार्क्स चाहिए। उसके लिए आप रट्टे मारें, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ना भी करें, तो पीपल डोंट केयर, व्हिच इज अ वेरी रॉन्ग ट्रैक। रट्टा मारना इज नॉट बीइंग एन इंटेलिजेंट पर्सन, टू बी ऑनेस्ट। ये है कि थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, अगर ये नहीं चल रहा तो स्ट्रीट ट्राई स्मार्ट, एंड you gotta be street लर्न smart। ऑन योर ओन। एग्जैक्टली। तो ये अभी भी जैसे एक एक्सेल का अगर हम देखें कि एक्सेल में से कुछ कैलकुलेशन फॉर्मूलाज निकालनी है, हैं, बिल्कुल फिर वो ऐसे। आता है, अच्छा समी भाई अब ये क्या करना है, भाई यूज योर ब्रेन, आई विल टेक 30 seconds टू सॉल्व इट, सो ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। आप खुद ही सॉल्व करोगे तो आपको भी पता रहेगा, यू हाँ, लर्न तो न्यू ये थिंग्स चीजें फ्रॉम इट। आप इंटर्नशिप से स्टार्ट करते हैं ना, आप ऑब्जर्व करते हैं, एग्जैक्टली, सम यू फॉर्मूला लर्न लगा के, कंट्रोल से आप किस तरह, बहुत सारी चीजें, इट एंड डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिकल व्हेन एक्सपोजर। when you're doing an internship, it's just not कि आप अभी job try to prove yourself. Why should the company hire you? Try to come up, think out of the box वाली situation के अगर एक process चल रहा है, how distinguish can you yourself optimize it? from the lot that's That is out why there, because being an interviewer, if you're interviewing 20 people, you're going to choose two people.
अब आप दो लोगों क्योंकि को तुम कैसे चूज करेंगे जब आपको उनमें डिफरेंट नजर आएगा? एग्जैक्टली देखें, डिग्री जेडी तो सब पढ़ के आए होते हैं ना, तो डिग्रीज भी बिल्कुल उनके पास बिल्कुल वैसी होंगी, एक्सपीरियंस भी उतना ही बिल्कुल होगा। तो एक 20 में से दो लोगों का आना, दैट मीन्स कि यू हैव टू डिस्टिंग्विश योरसेल्फ, यू हैव टू रीड, एग्जैक्टली यू नीड टू कम अप विद एग्जैक्टली आइडियाज। वही बात है ना एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की, कि बिल्कुल आप कंपनी में कैसे इनोवेशन लेके आ सकते हैं, आप क्या चीज एग्जैक्टली डिफरेंट कर और सकते हैं। हम्म। आप जब वहां से जब आप स्टार्ट करते हो ना, एंड माय एडवाइस फॉर एवरीवन, मतलब आप ग्रेजुएट होते ही है ना सोचो कि मैं अपना बिजनेस करूंगा, इट्स नेवर गोइंग टू हम्म। वर्क। यू नीड इवन टू इफ इट डज गेट वर्क, इनटू, उसका फायदा क्या है? देखिए, आपने कुछ एक्सपोजर मैं तो नहीं गेन किया ना। इस चीज में पार्कव्हील्स के सीईओ जो है सुनील मंज, उन्होंने जो कहा था व्हेन ही स्टार्टेड पार्कव्हील्स, हम्म। he went to the car showrooms, he used to watch their cars हम्म। because he wanted to say मैं अगर गाड़ियों के बारे में काम करना चाह रहा हूँ तो आई नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कार। रियली लाइक द तो एग्जांपल कि अगर आपने करीम स्टार्ट ऑफ चलवानी विद है, दैट, तो आप फर्स्ट करीम ड्राइवर लर्न बनो, हाउ टू, आप करीम कैप्टन बने ना, आप पहले खुद देखें, कैप्टन बने, अदरवाइज बिल्कुल कल को आपका ड्राइवर आपको कहेगा कुछ और आपको तो पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज यू वुड नॉट नो द एग्जैक्टली इन्स एंड आउट्स। सो एवरी, एग्जैक्टली आप डोंट ट्राई टू फाइंड शॉर्टकट्स, स्टेप शॉर्टकट्स बाय स्टेप, एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ कम्स, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, आहिस्ता अगर आहिस्ता आप चाहते हैं, मेक योर मेक गोल, योर वे, गोल बट देयर बना इज लें। वन शॉर्टकट, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो शॉर्टकट ये है कि आप जहां 21 में जॉब शुरू करना चाह रहे हैं, आप 17 18 में शुरू कर दें। अब ये 100%। शॉर्टकट नहीं है, बट अगेन अब आपका जब आप 25 तक आएंगे तो आप उससे इंप्रूव कर जाएंगे जो 30 में आपने करना है, बिकॉज ऑफ बिल्कुल योर बिल्कुल एक्सपीरियंस यू कैन जस्टिफाई। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि समी आप एज वाइज नहीं देखते होंगे, मतलब इफ अ पर्सन इज टैलेंटेड, को 22 का भी है तो, हंड्रेड और परसेंट एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल यू कैन बी लाइक ठीक है यार, ही डिजर्व्स। ठीक है यार बिल्कुल। हाँ। I work with people that have just been in the industry for 2 years, and when you listen to them talking, they have really spent some time, and I really love those kids. हम्म। मतलब ऐसे बच्चों को तो फिर मैं ये भी कहता हूँ कि यार if I go to another better place, अगर मैं कहीं पे भी I feel कि yes I need to pull this guy and bring him into my team, then definitely I would be willing to break you off from there. जितनी भी तनख्वाह वो आपको दे रहे हैं मैं डबल दे दूंगा आप, because we need sharp देखिए, इन thinkers दी ना। एंड, इन दी एंड ऐसे है बच्चे आपका बिल्कुल आरओआई इंक्रीज हो रहा है ना, आप बिल्कुल। आरओआई से ही उनको भी दे रहे हैं, तो डेफिनेटली Having the right team will help you achieve your goals better. तो मॉनेटरी ये तो है एस्पेक्ट कि वाइज भी और बिल्कुल उस एस्पेक्ट से भी। बिल्कुल तो यंगस्टर्स आउट देयर हु आर लिसनिंग, ट्राई टू, डोंट थिंक एमबीए कंप्लीट होगा तो जॉब मिलेगी, एमबीए नहीं होने दूंगा, एमफिल होने दूंगा यार। Try to, one thing that I liked about my degree, BSc Applied Management, was कि we had 1 year, जिसके 2 semesters थे हमारे, जिसके अंदर there was a program organization based learning. So we were evaluated based on जो हमारी बॉस की रिकमेंडेशन थी कि जी this is how he is working. And it's a very good initiative कि आप प्रैक्टिकली जा रहे हैं, आप काम करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल इंस्टेड ऑफ वही बिल्कुल थेरेटिकल लर्निंग में। आपको बिल्कुल प्रेशर भी कोई नहीं है, क्यों नहीं है प्रेशर? क्योंकि आप तो जॉब कर रहे हैं और आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। आप तो और एंजॉय करते करते ग्रेड्स भी आपके आ रहे हैं, एंड यू आर एक लर्निंग और एज वेल। चीज, एक और मैसेज फॉर द यूथ, ठीक है, आप अगर लेट्स सपोज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, आप एक स्टूडेंट हो अभी या आप हम्म। एक इंटरमीडिएट के बच्चे हो, हम्म। start trying to invest some time on YouTube to gain skill. TEDx टॉक्स देखें, तो बड़े TEDx बड़े talks देखें या एंटरप्रेन्योर्स का बारे में उनकी जर्नी सुने। tutorials भी देखें, लाइक कैन यू अगर आप नेम अ ग्राफिक सर्टेन, डिजाइनिंग में कोई कोई सर्टेन ऐसी कोई वेबसाइट या ऐसी कोई यूट्यूब मेंटोर, कैन यू नेम समवन जो आपको पर्सनली यार पसंद हो? there are many Brian, there's this guy Brian Dean that is in our industry, digital marketing के industry के Brian Dean है, नील ठीक है। पटेल है, ठीक है। there are other, बात यह है कि स्किल आप सर्च लर्न करो, आपको जैसे कि बहुत से I'm a मिल digital जाएंगे। marketer, हाँ। मैंने एमबीए भी किया है इन मार्केटिंग, लेकिन हमेशा ये याद रखें कि डिग्री आपको जॉब इंटरव्यू तक पहुंचाएगी, जो स्किल है ना यू हैव टू गेन दैट स्किल योरसेल्फ बाय डूइंग योर ओन रिसर्च, और अगर इंस्टेड ऑफ जॉब लग भी वाचिंग जाती है एंड यू आर गाने नॉट गुड सुनने, एट इट, एग्जैक्टली। गाने सुनने के बजाय थोड़ा सा टाइम, ये पेंडेमिक का जो टाइम था राइट, हम्म। पेंडेमिक का जो टाइम था, आई रियली इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ माय टाइम learning on Udemy how to run Google ads, how to run Facebook ads properly, मतलब आता था, लेकिन I really invested my time to polish that skill, learn how to represent your data properly. हम्म। तो स्किल जो है ना बहुत जरूरी है, मतलब ये डेफिनेटली। थियोरेटिकल चीजें तो आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ग्राफिक हम्म। डिजाइनर को देख लें,
you can see so many tutorials on how to use Adobe Photoshop and how to use other things. Adobe, बिल्कुल, you're absolutely तो right. स्किल जरूरी है, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू के सवाल होंगे वो उन चीजों पे बेस होंगे। कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि आपने कोई भी आपकी जो मार्केटिंग की क्लास है, ग्लोबल मार्केटिंग के कोर्स में आपको क्या आया था पेपर में, कोई ये इंटरव्यू में पूछेगा ही नहीं आपसे। Absolutely. एंड Sami, yeah, go ahead. आई डोंट थिंक जीपीए भी कोई किसी ने मुझे पूछा होगा, इतने मैंने जॉब्स हाँ करी है। मतलब तो I've इट्स been नॉट दैट, in the ट्राई टू industry for almost 10 years now. मैं 2013 में आज अपना 9 years old journey देख रहा था। मैं पेरियर यूनिवर्सिटी में I was sitting there and working. जी। एक चीज मैं जल्दी से कह दूं, डोंट लुक एट जीपीए का ये मतलब नहीं है कि आप 2.5 आगे पे आप ग्रेजुएट हो रहे आप हो। मेहनत ही ना करें, आप कहें मैं पास ही होना ट्राई यार टू ठीक है। मेक इट मिनिमम 3.0 से ग्रेजुएट होना है और सबने, दूसरा और ये कि उसके आगे आप इट्स नॉट बैड टू वर्क हार्ड। अगर आप अच्छी जीपीए भी लेना एग्जैक्टली चाह रहे हैं, इट्स अ गुड गोल। बट कहीं ये ना हो कि आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज इफेक्ट होने लग जाएं। सो कीप अ बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग। एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी जाएं, जीपीए की एक और तरफ भी चीज फोकस करें। अच्छा, एक वीव और गॉट चीज टू ये है। मिनट्स समी। अब ये आपका लास्ट एक मैसेज होना चाहिए कि Sure. एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आप अपनी ये बात के बाद व्हाट डू यू थिंक वुड बी द टिप्स आपके एक्सपीरियंस की बेसिस पे, बिकॉज you've been in the industry and you've got a very good name, mashallah. So For what would be 7-8 your years, yeah. suggestion to the youth? Go ahead. Well, my message would be number one, try to build some skill. Always try to improve. Matlab, you are never perfect. That's one. Always look for the moment you realize that you're doing something, you're not improving in it, or you're not learning new things from it. It's time for you to switch from that thing and try to gain knowledge. I think learnability एक चीज है. Always remember, you should be like a gear जहाँ पे कोई भी fix कर दे आपको तो आप चल पड़ो. तो कंफर्ट जोन से निकलना है हम सब ने. डोंट थिंक के यार ये काम मैं नहीं कंफर्ट कर जोन से सकता. नहीं निकलेंगे, फिर अफोर्डेबिलिटी तो जब आप नहीं होगी तो तो इवेंचुअली फॉल तो जिंदगी, उधर ही करना है ना आपने। तो हाँ शुरू जिंदगी में थोड़ा मुश्किल सा हो फंस जाएगी जाएं, आपकी. शुरू में थोड़ा सा हासिल कर लें। बिल्कुल. एंड दिस इज फॉर स्पेसिफिकली एंड इवन टॉकिंग अबाउट टियर 1 स्टूडेंट्स। कोई लम्स का बच्चा है या कोई हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है, कोई एमआईटी ग्लोबली, इफ दे आर लिसनिंग टू अस एज वेल, डोंट थिंक दैट आपने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लिया, बिकॉज बहुत रेस चलिए. है अब नो. सोसाइटी में। बिल्कुल People, बिल्कुल I see a बिल्कुल. lot of people, good doctors, they're not practicing, they're not getting jobs. So job, or and I, on the other hand, I see people who are not even masters, जिन्होंने किया ही नहीं है, graduation पूरी नहीं की, and they're running their own businesses. They've got certain ट्रू good ट्रू ideas. So ट्रू. talking about all those people like Bill Gates और जो बड़े बड़े नाम हैं, school dropouts, Steve Jobs and all. So I'm बिल्कुल not saying कि आप उनको follow करें, but persistent रहें और परसिस्टेंट रहे, consistency लर्न. दिखाएं। एग्जैक्टली. Consistency बहुत लर्नेबिलिटी होनी जरूरी है चाहिए आप में. जी। तो I बिल्कुल. think this was a very good message. Again, guys, you guys can subscribe us on Youth Alumni Association channel. We've got a YouTube channel. You can follow people like Sami, Mona, a lot of other people that we have. You can actually go ahead and watch their career journeys. And if you want to get in touch with them, LinkedIn पे यहाँ पे उनका नाम लिखा है, आपने टाइप करना है, connect request भेजनी है, and they're open to 100%. answering your questions. हाँ, ट्रू. ये अब आपने एक्सपेक्ट करें कि आप 1 मिनट में करेंगे और आंसर नहीं आया तो आपके समी तो जवाब नहीं देते। Obviously उनकी अपनी एक रूटीन है, मेरी अपनी एक रूटीन है. So we guys are managing a lot of other things. Sami, any last message Exactly. that you would want to give? Well, just this के always look towards building yourself and aim higher always. I think that's the main thing. Dream big. Learnability होनी चाहिए. Don't Dream forget big. के ख्वाब देखें और उनके बिल्कुल. पीछे पढ़ें, तो eventually और you're gonna get something out of it. सबसे important चीज, time management. Time is very short, very limited. Manage your time properly. Like you have two choices. 2 घंटे आप बैठ के पबजी खेलो या 2 घंटे बैठ के कोई स्किल हासिल करो. पबजी बाद में मतलब भी खेल पबजी सकते भी हैं. आप खेलें। देखें, when I was a child, we used to play cricket, outdoor activities बड़ी बिल्कुल थी. I टाइम used to मैनेजमेंट love है it. कि हम there is जुलाई a में time for समी everything. ऑनेस्टली साइकिलिंग और क्रिकेट दो मेरे पैशन थे, और मैं गर्मी सर्दी नहीं देखता था. आई यूज्ड टू गो आउट. तो पैशनेट अगर आप हैं ना, तो फिर आपको इतना ही पैशनेट होना चाहिए कि बिल्कुल यू नो गो फॉर इट. फिर वेदर कंस्ट्रेंट्स ना लेके आए, फिर ये चीजें ना वही लेके आए. बात है. There's a time for everything. There's a time to play that PUBG. There's a time to study. There's a time to learn something. Time There's a time to management. watch TV. Time Yeah. management. I think it was a very good session, and we look forward towards another session as well. We really like your journey regarding Nigeria, coming towards, you were a CS graduate and then you did your MBA in marketing.
So it's a very good combination, by the way, because I've seen a And lot of developers who are not able to market themselves. So you've true. got both the skills, like you're a software engineer, like you've got a degree in CS, and And then so yes, marketing as and well. So this is the true, whole the whole thing. triangle. And Yeah. that kind of gives me an advantage, because even though I'm in marketing, digital marketing does involve some knowledge of scripts and all. So Hmm. yeah, it makes me easy for it. It makes it a bit easy So compared always to have those an that don't. additional skill as well, apart from what Exactly. you've got. For example, True. if somebody is going to become a doctor and they're interested in English literature, go ahead and study that as well. Why? Because being a True. doctor, you're going to be into conferences. Now, what's going to distinguish you with another doctor is your that English literature skill that you've got, that you know how to एक speak. और Ji. एक और चीज आपकी बात से जो यूथ में है काफी मसला जो मैंने देखा है Ji, ji. कि समी भाई मुझे आके सिखा दें. Nobody is going to come and teach you. Nobody is Uh, going to teach you. you Nobody need to taught go me. there. You need to You need to observe. go. अब ये जमाने में तो इंफॉर्मेशन एंड कोर्सेज आर एट द डिस्पोजल ऑफ योर हैंड. मतलब आपके हाथ में है सारा कुछ. फोन में आपके सारा कुछ है. So learning something, learning a new skill या Use studying a new thing social is not a media challenge. positively. I think this is what ये बहाना ना मारें कि समी भाई बिजी हैं या अली भाई बिजी हैं तो वो मुझे जब तक हाथ पकड़ के ना सिखाएंगे. स्पून फीडिंग कोई नहीं करने वाला आपको. कोई भी नहीं करने वाला. Yeah, Sami, thank you so much. I need to hop on another podcast, and it sure, was a perfect, pleasure perfect. talking Thank to you you. so Trust much. me. Really Same here, nice same of here. you, joining today. Thank Thank you you so so much. much. Take Thank care, you so ji. much. Thank you. Take Thank care. you. Bye.